Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to continue our chapter number 4, that is complex number. Before this video, I want to tell you that we have discussed in the previous video about the basics of complex number, that how this iota comes in the mathematics form, right? If we are dealing with the under root of minus 1, we call this as iota. We learned in the previous video that if we multiply iota with the iota, it will give you iota square, and the value of iota square will be under root of minus 1 whole square, which is equals to minus 1. Same here, iota cube, it is equals to minus iota, and iota 4, this is equals to 1, right? Okay, so up to here the things are clear. You can easily solve this video, and if you want to clear the more topic of this complex number, please watch the previous video. And today we are discussing the operations related to the iota, right? That how to deal with the iota. It's very simple, that if we will add a real number, multiply the real number, divide it, how to find out the values of that. But if we have complex number, right, so we need to understand each and everything about it, means the operation related to it. So here, if we are considering any complex number, we take two values, a and b, right? And this a and b, the values are two real numbers. Then a number of the form a plus iota b. What I am telling here, a plus iota b. a प्लस आयोटा b स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए, राइट? अगर आप कोई भी नंबर लिखना चाहते हैं that is complex, you need to take the real numbers, right? A and then b, right? With that we will take iota also. For example, if I am writing 7 plus 2 iota, then we are writing minus 1 plus iota, 3 minus 2 iota, right? So these all are what? These all are complex number. If I write 1, so 1 we can write as 1 plus 0 iota. If I write iota, so iota, how to write it? 0 plus iota, right? So these all forms are complex numbers, right? Now, real and imaginary part of a complex number. If we write z is equals to a plus iota b, right? It is a complex number. Then in this, a is called the real part. What we call a? This is the real part, right? And what about b? The number which is with the iota, we called it imaginary part. उसको हम नाम देते हैं क्या? Imaginary part, right? And how to denote it? कैसे denote करेंगे? Z हमारा complex number है, तो we are writing real part of Z, right? How we are writing? Real part of Z. And imaginary part, I am writing here as I am of Z, which is equals to imaginary part of Z. It is equals to, that is here B, right? A is real part of Z and B is imaginary part of Z. Now here it is mentioned this is real part and this is imaginary part. The real part of Z is denoted by RE of Z and imaginary part is denoted by I am of Z. If I have an example, here I am taking the example Z is equals to 3 minus 4 iota, right? So this is real part of Z. It is equals to 3. And then we write the imaginary part. So imaginary part I am of Z, that is equals to, can you see iota के साथ में हमें क्या number दिखाई दे रहा है? Minus 4. So the value will be equals to minus 4. So how to find out the real part and imaginary part from a complex number? By simply checking कि जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारा रियल पार्ट बनेगा, और जो पार्ट हमारा आयोटा के साथ लिखा जाएगा वो हमारा क्या बनेगा? इमेजिनरी पार्ट, राइट? नाउ listen very carefully. We are discussing a very important topic here, complex number. यहाँ पर आपके competitions के जो भी आपके एग्जाम्स आते हैं उसमें इनके बेसिक्स से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, राइट? तो आज का जो अभी जो मैं आपसे जो डिस्कस करूंगी उसकी चीज, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैम क्या मतलब है इसका, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी डाउट है, यू प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू क्लियर द ईच एंड एवरी डाउट ऑफ यू, राइट? नाउ हियर
what we are discussing? Purely real and purely imaginary complex number, right? Since we have discussed that complex number, it is denoted by the combination of, it is denoted by z, and it is the combination of real and imaginary part. But what's this purely real and purely imaginary number? So purely real, if we are talking, then a complex number z is purely real if, रियल कब होगा? देखो रियल कब होगा? जब ये पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट नहीं होगा. एंड व्हाट पार्ट इट इज? ये कौन सा पार्ट है हमारा? इमेजरी. तो अगर इमेजरी पार्ट जीरो हो जाए, राइट, इमेजरी पार्ट को अगर जीरो कर दें, तो हम कहेंगे ये नंबर कैसा हो गया? कैसा हो गया? प्योरली रियल. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्योरली इमेजनरी ही होना चाहिए. इसका मतलब उसका रियल पार्ट नहीं होना चाहिए. रियल पार्ट अगर नहीं होना चाहिए तो हम ए को हटा देंगे. अगर ए को हटा देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? आयोटा बी. इट मीन्स here the real part is 0. So real part of this is equals to 0. Now set of complex number, the set of all complex number, it is denoted by C. जितना भी set होता है उसको C से denote करते हैं. C में किस तरह की फॉर्म आती है? We have discussed. It is equals to A plus iota B, where A and B they belongs to R. R is the real number. Since a real number A can be written as, we are saying A plus 0 iota, therefore every real number, हमने कहा कि अगर मेरे पास 2 है तो आप उसको लिख दो 2 plus 0 iota, right? If we have 100, I am writing 100 plus 0 iota. If I have here minus of 200, so here can I write minus 200 plus 0 iota? Yes. Implies every real number is a complex number, right friends? So real number contained in complex number, where R is a set of all the real number and C, it is a set of complex number. So real number, these numbers are contained in the complex number. Clear friends? Now let's see that how to equate complex number, right? We are equating the complex number. So here two numbers we are considering, z1 that is equals to a1 plus iota b, z2 that is denoted by a2 plus iota b2, right? दो नंबर ले लिया आपने कोई भी, तो ये इक्वल कब होंगे? When we say these are equal, हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो उसके लिए कंडीशन है. What is that condition? ना a1 को a2 के इक्वल होना चाहिए और b1 को b2 के इक्वल होना चाहिए, right? The first number should be equal to first number and second number should be equal to second number, right friends? Right? The real part should be equal to the real part and imaginary part should be equal to imaginary part. I am not saying real with the imaginary, imaginary with the real. No, real part के इक्वल हो, imaginary part के ही इक्वल हो, right? So here can you see real part of z1 equals to real part of z2, imaginary part of z1 that is equals to imaginary part of z2. Then we say z1 equals to z2. तब हम कहेंगे z1 किसके इक्वल होगा? z2 के. Real part of z1 equals to real part of z2 when we have this and this both are equal. जब दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, right? Clear? Now here if we have a question z1, it's given here z1 it is equals to 2 minus iota y, and if we have z2 that is equals to x plus 3 iota. Now according to the question z1 equals to z2, so now only we have studied the properties. अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि रियल पार्ट ऑफ z1 किसके इक्वल होना चाहिए? इट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजरी पार्ट ऑफ z1 इट इज इक्वल्स टू इमेजरी पार्ट ऑफ z2. बिल्कुल. तो रियल पार्ट, व्हाट इज द रियल पार्ट इन z1? दिस इज द रियल पार्ट, राइट? एंड दिस इज द रियल पार्ट हियर. So here we are saying 2 equals to x. x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 2 के इक्वल हो गई. Can you see here what is the imaginary part? आयोटा को हटा दो. आयोटा को अगर हटाएंगे तो we have here minus of y, right? So minus y is equals to 3. Y comes equals to minus of 3. So here we found the value of x and y. X equals to 2 and y equals to minus 3. So this is how, if we have two values which are equal, we can easily find out the value of any unknown values like real or imaginary part. If it is not given, we can simply find it. Now
Here we have with the next question a plus b minus iota into 3a plus 2b, it is equals to 5 plus 2 iota. Now students, as I told, the real part is equals to real part. अगर ये हमारे पास एक टर्म है z1, ये हमारे पास दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, तो हमने कहा ये दोनों इक्वल है, तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। z1 और z2 के रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए, मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या बनेगी 5। एंड हियर कैन यू सी दिस नेगेटिव साइन ऑल्सो, यस, माइनस ऑफ 3a प्लस 2b इट इज इक्वल्स टू 2, राइट। Now 3a plus 2b I am writing it equals to minus 2. Now put it here, 3a plus 2b equals to minus 2, right? Now multiply this with the 3, your wish, 3a plus 3b, elimination method लगा रहे हैं हम, 15 and this is 3a plus 2b equals to minus 2. Now solve, subtract it, right? 3a minus 3a cancel, 3b minus 2b, 3b minus 2b is equal to b, 15 and यहाँ पर minus 2 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, 15 plus 2 that is equals to 17. b की वैल्यू आ गई आपके पास, you can put here a plus 17 equals to 5, a equals to 5 minus 17 which is equals to minus का 12. तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी minus 12. So this is how we can find out the values of any unknown value if you it's given that they are equal. Now the next is how to add. कैसे किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर सकते हो, it's very simple. Here if we have z1, this is equals to a1 plus iota b, z2 it is given equals to a2 plus iota b2, then the sum of these means z1 plus z2 we define as, कैसे करेंगे, z1 में z2 को add कैसे करते हैं, the real parts it will be added in the real and the imaginary part that is added in the imaginary. If I am writing z1 it is equals to 2 plus 3 iota, so what is the real part, it is equals to 2, right? The imaginary part, this is equals to 3. Now here we have here this real part of z2, it is equals to 3 and here imaginary part that is equals to minus 2. Now how to add, कैसे करते हैं किसी भी दो complex number को add, real plus real, so 2 plus 3, are you getting students, 2 plus 3 and here the imaginary part that is 3 minus 2, 3 minus 2 is equal to 1, so it is here 5 plus iota, answer is equal to 5 plus iota. Now here the properties of addition of a complex number, so here we will study कि complex number की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, राइट। एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव मीन्स इफ वी ऐड z1 plus z2 the value will be equal to z2 plus z1. फॉर एग्जाम्पल टेक द प्रीवियस वन, प्रीवियस एग्जाम्पल से हमने कहा z1 plus z2 आपके पास आया 5 plus iota, तो अगर आप z2 plus z1 करेंगे, z2 that is 3 minus 2 iota plus 2 plus 3 iota, so what I am telling, रियल में रियल ऐड करो, 3 plus 2 कितना होगा 5, 3 iota minus 2 iota that is iota, so is it same, z1 plus z2 equal to z2 plus z1 means दोनों वैल्यू क्या है, बिल्कुल करेक्ट है and we say values are equal, right? Okay, they are commutative also. Addition property is commutative in complex number. Second, then we say it is associative also. Associative means if we add z1 plus z2 and then z3 that is equals to z1 plus z2 plus z3 also. So this will be also equal. For example, if I am taking z1 that is equals to 2 plus iota, z2 that is equals to 2 plus 3 iota and z3 I am taking it as 3 plus iota, right friends? So let's add them. I am adding for z1 z2, so 2 plus 2 4, 3 iota plus iota that is 4 iota and z3 it will be as it is 3 plus iota. Then if we open the bracket, 4 plus 3 it is equal to 7 and 4 iota plus iota it is equals to 5 iota, right? The answer of the left hand side equal to 7 plus 5 iota. Let's add z1 plus z2 plus 3. So z1 plus z2 2 plus 3 which is equals to 5, z3 it's 3 plus 1 it is equals to 4 iota. The value of z1 is 2 plus iota plus 5 plus 4 iota. So here as you add 2
plus 5 which is equals to 7 and 4 plus iota that is equals to 5 iota. So here as we observe the left hand side equals to right hand side. Now students, here let's see the existence of additive identity. Additive identity, we say the complex number if we take 0, right? So 0 I am writing as 0 plus iota 0, right? So 0 is what? It is the additive identity. For example, if I write 2 plus 3 iota, right? प्लस 0, राइट, तो वो भी आपका क्या आएगा? 2 प्लस 3 आइटा ही आएगा. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. इसका मतलब 0 क्या बनेगी? इट इज कॉल्ड दी एडिटिव आइडेंटिटी. राइट, क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, राइट? आइडेंटिटी का मतलब क्या है? अभी हमने कहा 0 आना चाहिए. z में क्या ऐड करें कि 0 आए? तो दैट इज माइनस ऑफ z. सो हियर minus z is called additive inverse, right? Okay, now here same as we did this of operation addition, same here we are talking about the subtraction also. Z1 I am taking a1 plus iota b, z2 I am taking a2 plus iota b2 with be the two complex number. Then the subtraction of z2 from z1, subtraction of z2 from z1. z2 किससे subtract करना है? z1 से. It is denoted by z1 minus z2 and it is defined as z1 माइनस ऑफ z2, राइट? तो आप क्या कर रहे हो? ऐड ही कर रहे हो एक तरह से. z1 में क्या? माइनस z2 को ऐड करना है. तो हियर आई एम टेकिंग माइनस 2 प्लस 3 आइटा, दिस इज हियर. And z2 की जगह क्या होना चाहिए? minus z2. So here minus 4 and here minus 5 iota. So here keep the value minus 4 iota, minus 2 minus 4 that is equals to minus 6, and plus 3 and minus 5 it is equals to minus 2. Answer is minus 6 minus 2 iota. So this is how we do the subtraction. You can simply say कि real value of z1 में से क्या करना है? रियल वैल्यू ऑफ z2 को माइनस करना है एंड देन इमेजरी वैल्यू ऑफ z1 में से इमेजरी वैल्यू ऑफ किसको सब्ट्रैक्ट करना है? z2 को, एंड देन कीप द आयोटा एज इट इज. देन दैट विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यूज. नाउ let's understand multiplication. So students, if we are saying z1 it equal to a1 plus iota b, right? z2 equals to a2 plus iota b2. Now the multiplication of z1 with z2 is denoted by, don't write any sign here, आप सिर्फ z1 z2 लिखेंगे. It means this is the multiplication. ये क्या बन जाएगा? multiplication. So z1 here it is a1 plus iota b1. Then z2 a2 plus iota b2. Let's multiply a1 with a2. So a1 a2. Then a1 with this. It's iota into a1 b2. Then multiply this iota into b1 a2. And here iota into iota. Iota square b1 into b2. Right? Keep a1 a2 as it is. Right friends? And here this iota square value is minus 1. So minus 1 into b1 b2. Right? So I am keeping here minus of b1 b2. Clear? Is it clear up to here? ठीक है. Now iota हम कॉमन ले लेते हैं मिडल टर्म से. So it is a1 b2 plus b1 a2. Right? So let's see the value here. This is z1, this is z2. z1 it is equals to 3 plus 2 iota. Right? z2 it is equals to 2 minus 3 iota. So students, how to multiply? हमने कहा एक वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड से मल्टीप्लाई होगी. So let's do 3 into, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 minus 3 iota को. फिर आपके पास है 2 iota. तो 2 iota को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 minus 3 iota से. So let's multiply 3 into 2, that is 6. 3 into 3 minus 9 iota. 2 into 2 it is 4 iota. And here minus as it is, 3 to 6. Iota into iota square. So 6 iota square की वैल्यू -1 minus plus 6 and minus 9 plus 4 iota it is equals to minus 5 iota. So answer is 12 minus 5 iota. So this is how we do the multiplication. Right? Now multiplication property, it is commutative, it is associative. You can do take an example and then you just try to multiply it. Right? Now
how to find out the existence of the identity element of for the multiplication. For multiplication what we say कि आपके पास कोई ऐसी वैल्यू लाओ जिससे वही वैल्यू आ जाए, मल्टीप्लाई ऐसी वैल्यू से करो जिससे वही आ जाए, आइडेंटिटी बन जाए, मतलब सेम वैल्यू आए, तो दैट इज वन ओनली, है ना। किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी क्या बनेगा, वन। आइडेंटिटी क्या बनेगा, वन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। नाउ लेट्स कंसिडर दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपके पास कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए ना जिससे मल्टीप्लाई करके वन बन जाए। किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे आइडेंटिटी बने। सो दैट इज व्हाट, वन बाय जेड, दैट इज वन बाय जेड। वन बाय जेड कैन आई राइट जेड टू द पावर माइनस वन, दैट विल ऑल्सो गिव द सेम वैल्यू, राइट। आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसको मल्टीप्लाई करने पर वन आ जाए, तो वो जो दूसरा नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल्ड इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। ओके, नाउ here multiplication of complex number is distributive over additive of complex number. For example, if we have z1 into z2 plus z3, so first multiply z1 into z2, then z1 into z3, z1 z2 and plus z1 z3. Same here, z2 into z1, it is z2 z1 and z3 z1, right. So this is the left distributed, this is the right distributed. Now let's understand division of complex number, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, और अब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन। सो द डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बाय अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z2 is defined as the multiplication of z1 by multiplicative inverse of z2। आपको करना ही क्या है, कोई भी नंबर होगा उसको रेसिप्रोकल में लेके जाना है, राइट। जैसे आप डिवाइड करते हैं तो z1 इट इज 2 plus 3 iota, z2 इट इज 1 plus 2 iota। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ 1 plus 2 iota कैन आई रैशनलाइज। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब भी कोई भी वैल्यू होगी तो आप उसको रैशनलाइज करेंगे, राइट। टेक द टर्म, टेक द अपोजिट वैल्यू। नाउ मल्टीप्लाई 2 into 1 it's 2, 2 to the 4 iota plus 3 iota and minus 3 to just 6 iota square, divide by. Now here this is a plus b and this is a minus b. The value is a square minus b square. It is 1 whole square minus of 2 iota whole square. 1 minus 2 का square 4, iota into iota, iota square. So the value is 1 minus 4 into minus 1. This is 2 minus iota square की value minus 1, minus minus plus 6 minus iota divided by 1 plus 4. So this is 8 minus iota by 5, right. Now separate it, 8 by 5 minus iota by 5, right. So this is how we do the division. कैसे करते हैं, you understand it, okay. And then the next video we will talk about modulus of complex number. Up to this you please revise the operation, addition, subtraction, multiplication and division. We learned about additive inverse, additive identity, multiplicative inverse and multiplicative identity also, ठीक है। If you like the video please share it with your friends, and for the next video please subscribe our channel so that it will come in your box. Thank you. Bye bye.